ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतं प्रथमस्कन्धः अथ सप्तमोऽध्यायः। शौनक उवाच। निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायण श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किमकरोद्विभो। सूत उवाच। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धन। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्डमण्डिते आसीनोपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं। भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयां। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमदोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांसचक्रे सात्वतसंहितां। यस्यां श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा। ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शोकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। शौनक उवाच। स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा बृहति मेतामात्मा रामसमभ्यसत्। सूत उवाच। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्थ अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतु किं भक्तिमित्थम्भूत गुणो हरि। हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणी अद्य गान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रिय। परीक्षितोत्तरादर्शिर्जन्म कर्म विलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्णकथोदयम्। यदा मृदे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्धगदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। भर्तुप्रियं द्रौणीरिति स्म पश्यन् कृष्णसुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद् विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना। तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। तदा शुचस्ते प्रमिजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धो शिरा ततायिन। गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा। इति प्रियां बल्गुविचित्रजल्पै ससान्त्वयित्वा च्युतमित्रसूत। अन्वाद्रबद्धं सित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमना रथेन। पराद्रवत्प्राणपरिप्सुरुर्व्यां यावद्गमं रुद्रभयात् यथार्कः। यदा शरणमात्मानमक्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरोमेन आत्मत्राणं द्विजात्मज। अथोपस्पृश्य सलिलं सन्ददे तत्समाहित अजानन्नुपसंहारं प्राणकृत्स उपस्थिते। ततः प्रादुष्कृतं तेज प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच। अर्जुन उवाच। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। त्वमाद्य पुरुष साक्षादीश्वर प्रकृते पर मायां व्युदस्य चिक्षक्त्या कैवल्ये स्थितात्मनि। स एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतस विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजीर्षया स्वानां चानन्यभावानामनुध्यानाय चासकृत्। किमिदं स्युत्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यं सर्वतो मुखमायाति तेजा परमदारुणम्। श्रीभगवानुवाच। व्यथेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारं प्राणबाध उपस्थिते। न यस्यान्यतमं किञ्चित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जयस्त्रतेज उन्नद्धमस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा। सूत उवाच। श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुन परवीरः स्पृष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय सन्ददे। संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसि सरसंवृते आवृत्य रोदशिखं च बभ्रिधार्तेर्कवह्निवत्। दृष्ट्वास्त्रतेजस्तुतयोस्त्रिलोकान् प्रदहन् महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तकममं सत।
प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं सतं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयं तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं ववन्दामर्षतां राक्ष्य पशुं रसनया यथा शिबिरायनिनि सन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षण मैनं पार्थार्हसे त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जय योऽसावनागस सुप्ता नवधिन्निशि बालकान् मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरतं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित् स्वप्राणान्यपर प्राणै प्रपुष्णात्यघृणा खल तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधा पुमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः तदसौ बध्यतां पाप आततय्यात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदित नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान् अथोप्येत्य स्वशिबिरं गोविन्द प्रियसारथि न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्य आत्मजान् हतान् तथा हृतं पशुवत्पाशबद्धमवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरो सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च उवाच चासन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु सरहस्य धनुर्वेद सविसर्गोपसंयम अस्त्रग्रामस्य भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यस्ते नान्वगाद् वीरसुकृपि तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजीनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमवीक्षणस मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहमृतवत्सार्ता रुदिम्य श्रूमुखी मुहो यैकोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्यासु सानुबन्धं सुचार्पितं सूतोवाच धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः नकुलः सदेवश्च योधानो धनञ्जय भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्येयाश्च योषितः तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वदस्मृत न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुज आलोक्य वदनं सख्योरीदमाह सन्निभ श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायि वदार्हण मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यानुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च सूत उवाच अर्जुन साज्ञाय हरिर्हार्दमथासिन मणिं जारमूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजम् विमुच्य रसनाबद्धं बालहत्याहतप्रवं तेजसा मणिना हीनं शिबिरान्निरयापयत् वपनं द्रविणा दानं स्थानान्निर्यापणं तदा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिका पुत्रशोकातुरा सर्वे पाण्डवा सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रौणी निग्रहो नाम सप्तमोत्सवः। हरि ओं तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।